A very good morning to everybody. So we have all our distinguished guests for this one-day seminar. They've already entered the auditorium. A very warm welcome to all our distinguished guests. Our very revered DDG North Zone, our most respected Honorable CMD NCL, our revered functional directors, Northern Coalfields Limited, who have all arrived. A very warm welcome to you all, sirs. नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों को एवं हमारे आभासी मंच से जुड़े हुए सभी मेहमानों को नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से डीजीएमएस के तत्वावधान में एनसीएल द्वारा आयोजित और श्रम मंत्रालय के मार्गदर्शन में इस अग्रणी खान सुरक्षा पहल, दिस पायनियरिंग माइन सेफ्टी इनिशिएटिव one-day seminar on best practices in Opencast Mining में आंतरिक एवं हार्दिक स्वागत। स्वागतम सुस्वागतम आनंद मंगल मंगलम स्वागतम शुभ स्वागतम। A very good morning, and on behalf of Northern Coalfields Limited, I extend a very warm welcome on this pleasant sunny morning to all our guests, the galaxy of the mine safety fraternity and the coal glitterati. This very distinguished August gathering present here, physically in the cool comforts of this auditorium that has been dressed up for the mine safety extravaganza and to mark the iconic week celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. My heartiest welcome to all our revered guests this morning. Coal mining throws open a vista of inherent operational and occupational hazards, putting personal, equipment, and environment at risk. Safety is imperative and strategic for the coal industry and occupies its position of paramount importance in the mission statement for Coal India Limited, hence Northern Coalfields Limited. Coal India Limited is safely covered under the Directorate General of Mine Safety, DGMS, the Indian government regulatory agency for safety in mines, and has adopted a well-defined safety policy which is the core of its safety initiatives. हम इस सेमिनार से समापन कर रहे हैं हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस आइकॉनिक सेफ्टी वीक सेलिब्रेशंस और आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन 7th to 13th March 2022 का, जिसके हम अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। I have the proud privilege today to welcome amidst us as our chief guest, Honorable Deputy Director General of Mine Safety, North Zone, Shri Satish D. Chidarwar, who has kindly consented to grace this occasion. We welcome you, sir, from the core of our hearts. Can we join our hands, please? Loudly. Welcome, sir. I welcome the President chairing this one-day seminar, our most respected Chairman cum Managing Director, Northern Coalfields Limited, Shri Bhola Singh sir, who conceived the idea of this pioneering mine safety initiative, helped it get wings ready for its flight. We stand humbled under your leadership and guidance, and it's a proud privilege to welcome your physical presence amidst us, sir. Welcome, sir. Can we put our hands together again, once again? I think this is one of the first times that we've got the opportunity to welcome Shri Bhola Singh sir in a technical seminar from this auditorium. I now welcome our revered functional directors, Director Technical Operations, Dr. Aninder Sinha, Director Finance, Additional Charge Director Personnel, Shri R.N. Dubey, and Director Technical Projects and Planning, Shri S.S. Sinha sir, without whose efforts and support this mega event would not have seen the light of the day. I also welcome all our guests from DGMS, representatives from Sasan Power Limited, JP Ultratech Cement, APMDC,
JCC members of NCL, Safety Board members of NCL, CMOI President and Secretary, all our area general managers from NCL projects, HODs, general managers from NCL headquarters, unit heads from CWS, CISF, Fire Station, NSC, and 132 kV substation Nigahi. HMM companies supporting NCL like Caterpillar, Gemco, Komatsu, L&T, Volvo, explosive suppliers, HOE contractors, coal transport contractors, PRO, members of print and media, ladies and gentlemen, boys and girls. I now request all present here in this auditorium to please stand in respect as the Coal India theme song is being played. The concerned may please arrange to play the Coal India corporate song. Thank you so much, sirs. We at NCL post a very interesting tagline. This was especially relevant during the COVID times, which I think we've just left behind, fortunately. When the world was at home, Coal India kept the lights on. कोरोना काल में भी हम ऊर्जा के प्रहरी सजग रहे, अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के. The benevolence of the sun has been worshipped by man since the earth was created. Invoking the energy of this light and seeking blessings from the Almighty for this seminar, I now request our chief guest, DDG North Zone, CMD NCL, and our revered FDs to please step forward for the ceremonial lamp lighting, and the stage management girls, please facilitate the proceedings. Thank you so much, sirs. With this, we now begin the proceedings of this morning. Now to welcome our revered guests on the dais. First of all, I please welcome on the dais, sir. Please welcome on the stage, Shri S.T. Chidarwar, sir, Deputy DG, Mine Safety North Zone. Deputy Director General of Mine Safety,
Shri Chidarwar sir. So welcome on stage. I now welcome CMD NCL Shri Bhola Singh sir, who is also the president chairing the seminar for this day. So welcome on stage, welcome on the day sir. I now welcome Shri Anindya Sinha, Director Technical Operations on stage. Welcome on stage sir. I now welcome Shri Ram Narayan Dubey sir, Director Finance, Additional Charge Director Personnel, and Shri S.S. Sinha sir, Director Technical Projects and Planning sir. Please welcome on the dais. Welcome to the stage. I also welcome amidst us Shri S.S. off the dais, but our most revered guests, Shri S.S. Prasad, who's DMS Mining Varanasi region. Welcome sir. Shri Prakash Kumar, DMS Electrical Ghaziabad Zone. Welcome sir. Shri Sandeep Srivastav, DMS Mechanical Ghaziabad Zone. Welcome sir. Shri N. Nageshwar Rao, DMS Mechanical Gwalior Region. Welcome sir. Shri Sujit Katewa, DMS Mining Ajmer Region. I think Shri N. Nageshwar Rao is DMS Mining Gwalior Region. Welcome sir. Shri Surjit Katewa, DMS Mining Ajmer Region. Shri R.K. Singh sir, DDMS Mining. Shri Surjit Katewa would be DDMS Mining Ajmer Region. Shri R.K. Singh, DDMS Mining Gwalior Region. Shri A.K. Das, DDMS Ghaziabad Zone. Shri Sanket Kumar, DDMS Mechanical Ghaziabad Zone. Shri Tapas Behra, DDMS Electrical Ghaziabad Zone. A warm welcome to you all sir from the DGMS. I also welcome Shri P.K. Singh, our most revered JCC members. Shri P.K. Singh, BMS. Shri Maya Shankar Singh from BMS. Shri Ajay Kumar from CMS, Shri O.P. Malavia from RCSS, Shri B.S. Bisht, RCSS, Shri B.N. Singh, HMS, Shri Ashok Kumar Pandey, HMS. I also welcome CMOI President Shri Alok Kumar and CMOI Secretary Shri Sarvesh Singh. And most welcome to all the NCL Safety Board members. So with this warm welcome for the next part of the proceedings, I now hand over the podium to Shri Himanshu Wadhwani, who is Deputy Manager, Amlori Project. Himanshu, please. Thank you, ma'am. आज मंच पर उपस्थित हैं हमारे आज के सेमिनार ऑन बेस्ट सेफ प्रैक्टिसेस इन ओपनकास्ट माइन के मुख्य अतिथि श्री एस.डी. छिदरवार सर, डिप्टी डीजी माइन सेफ्टी गाजियाबाद जोन। मेरा हमारे सीएमडी एनसीएल श्री भोला सिंह साहब से सविनय निवेदन है कि सर को बुके प्रदान कर उनका आज के सेमिनार में स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा आप सभी से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे मुख्य अतिथि का आज के सेमिनार में स्वागत करें। हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम गौरवान्वित हैं हमारे कंपनी के मुखिया सीएमडी एनसीएल श्री भोला सिंह साहब को हमारे मध्य पाकर। मेरा सविनय निवेदन है हमारे डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस श्री आनंद सिन्हा साहब से कि सर का बुके देकर इस सेमिनार में स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के इस सेमिनार के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं श्री आनंद सिन्हा सर, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस एनसीएल। मेरा निवेदन है श्री विपिन कुमार साहब जीएम जैन से कि सर का बुके देकर इस सेमिनार में अभिनंदन करें, स्वागत करें। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडिशनल चार्ज डायरेक्टर पर्सनल श्री राम नारायण दुबे साहब भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है श्री पी.के. बिस्वाल साहब जीएम TS2 CMD एनसीएल। सर, आप सर को बुके प्रदान कर उनका इस मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे कंपनी के निदेशक तकनीकी योजना एवं परियोजना श्री S.S. सिन्हा साहब हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है श्री राजेंद्र राय साहब जीएम चिंगुर्दा से कि सर का हमारे मध्य बुके देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी से निवेदन है कि अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इस सेमिनार में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। Thank you, sir. This seminar on best safe practices in opencast mines
aims to bring together all stakeholders, including regulatory authorities, mine managers, engineers, employee representatives, equipment and explosive manufacturers, industry partners on the same platform for sharing their experiences and ideas for addressing the safety issues in open cast mining. To welcome all the dignitaries and stakeholders present here, I request our Director Technical Operations, NCL, Shri Dr. Anindya Sinha sir, for welcome speech. Sir has been graduated in mining engineering in 1984 with gold medal and completed his masters in 1986 both from IIT ISM Dhanbad. Sir is holder of first class mine manager certificate of competency to manage coal mines and also directorate from Poland. Sir has more than 33 years of overall experience in coal sector of India and abroad. Sir has also served as project advisor, Ministry of Coal, Government of India. Sir has assumed charge of Director Technical Operations, Northern Coalfields Limited since May 2020. I welcome you, sir. Good morning to one and all. आप सभी को आज की ये सेफ्टी के ऊपर सेमिनार में स्वागत। Respected Chief Guest, Sri S.D. Chidarwar, Deputy Director General, Northern Zone DGMS, our respected Honorable CMD, Sri Bhola Singh, respected fellow directors, Sri R. N. Dubey, Director Finance, Additional Charge Director Personnel, Director Technical Project and Planning, Sri S. S. Sinha, our respected Director Mine Safety from different zones, Deputy Director Mine Safety, the representative of neighboring mining areas, NCLs, all area general managers, HODs, and headquarter general managers, HODs, respected JCC members, safety board members, CMI representatives, distinguished authors and delegates, ladies and gentlemen. Mining industry, especially the coal mining, is one of the toughest industries with harsh working environment where an individual tolerates a wide range of physical and psychological conditions. We all take pride to call ourselves miners and being associated with the coal mining industry directly or indirectly. As the nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, commemorating 75 years of independence and glorious history of its people, culture, and achievements, I feel proud to applaud each one of to be part of this journey and being proud citizen of India. It is my proud privilege that I welcome you to this pioneering effort on best safe practices in open cast mines, hosted by Northern Coalfield Limited in association with Director General of Mine Safety as a part of observance of iconic week of Ministry of Labor and Employment under the theme of Achievement at 75, Resolve at 75, and Action at 75 of Azadi Ka Amrit Mahotsav initiative of Government of India. I am highly honored and feel privileged to have been given this opportunity to welcome everyone on this very special event. The seminar aims to bring together all stakeholders,
including neighboring industries, mine regulatory agency, engineers and representatives of unions on the same platform where discussion and deliberation on the emerging areas and in coal mining will be held. This seminar will also provide an opportunity to learn from vast pool of knowledge of best practices being adopted in various mines operating in the Moher Basin, with legal insights on various dimensions added by dignitaries from DGMS. The seminar will also furnish tool setting out principles that can be reflected in the design and implementation of policies, guidelines, strategies, programs, legislation, SOPs. This will help to raise the profile of safety and health issues in open cast mines and contribute to the health and moral and well-being of the workers in the industry. Anything it may be today, you all have an opportunity to share and learn the best from each other and take home the new ideas and zeal to further the cause of safety in the our mining industry. Taking our morning further to bring with the seminar, I, on behalf of Northern Coalfield Limited family, heartily welcome all our dignitaries present on the dais. Our chief guest, Sri S.D. Chidarba, Deputy Director General Northern Zone, Ghaziabad. He is kindly consented to be present here and for being the chief guest of this seminar. I also extend my gratitude to him for being the beacon bearer and the guide of organizing this seminar. Thank you, sir. Welcome you, sir. I cordially welcome our respected Chairman cum Managing Director of Northern Coalfield Limited, Sri Bhola Singh Saab, for being the energy to fuel and power Team NCL. Sir, your able leadership and motivation has guided the NCL team to make this seminar a constructive and mindset transforming event that will be a trendsetter for the way forward for NCL. Thank you and welcome, sir. I heartily welcome my fellow directors, Sri Ramnarayan Dubey, Director of Finance, Additional Charge Director Personnel, and Sri S.S. Sinha, Director Technical Project and Planning, for lending their dedicated support and guidance in all phases and all domains of NCL. And they have laid NCL flag high on this occasion and always, as always, stood tall to energize Team India, Team NCL, and to make this event a success. I welcome you, sir. Thank you. I welcome our special guests from neighboring mine, from Reliance, from Ultratech, from JP Ventures Limited, APMDC, who are special invitees to this seminar. We at Northern Coalfield Limited believe in learning potential. Our chairman holds opinion that we can learn and take inspirations from each other's success, as the neighbors have similar aspirations, challenges, and opportunities. I, on behalf of NCL, welcome you all, sir. Thank you. I cordially welcome our regulators, our safety enforcing authorities, particularly our DGMS officials, here present in this hall. Our Director Mine Safety, our Deputy Director Mine Safety, Sri S.S. Prasad, DMS Mining, Varanasi region,
Sri R.S. Meena, Director Mine Safety, Ghaziabad Region, Sri Prakash Kumar, DMS Electrical, Northern Zone, Ghaziabad, Sri Sandeep Srivastav, DMS Mechanical, Northern Zone, Ghaziabad, Sri N. Nageshwar Rao, DMS Gwalior Region, Sri Surjit Katewa, DMS in charge, Ajmer Region, Sri R.K. Singh, DDMS Gwalior Region, Sri A.K. Das, DDMS Ghaziabad Region, Saket Kumar, DDMS Mechanical, Northern Zone, Ghaziabad, Sri Rupesh Mehta, DDMS Electrical, Northern Zone, Ghaziabad, Sri Tapas Behra, DDMS Electrical, Northern Zone, Ghaziabad. Sir, your presence, your continual support to Northern Coalfield Limited in particular, we are really thankful to you. You are cordially welcome to this seminar and hope your experience, your expertise will certainly going to put a knowledge sharing event for this particular seminar. Thank you and welcome you, sir. I welcome our most honorable JCC members who are the energy and the inspirations behind the development, the success of Northern Coalfield Limited. Sri P.K. Singh, BMS, Sri Maya Shankar Singh, BMS, Sri Ramendra Kumar, CMS, Sri Ajay Kumar, CMS, Sri O.P. Malviya, RCSS, Sri B.S. Bist, RCSS, Sri Ved Narayan Singh, HMS, Sri Ashok Kumar Pandey, HMS. Thank you, sir. Welcome you, sir. I welcome our safety board members. They are the safety board members. They are from the mine authorities. They are the basic inspectors for the mine development and its achievement. I welcome the safety board members, Sri Bijay Rai, BMS, Sri Samendra Nath Singh, BMS, Sri Jina Khan, CMS, Sri S.D. Tiwari, CMS, Sri Niranjan Jha, RCSS, Sri Indesh Kumar, RCSS, Sri Ashok Kumar Pandey, HMS, Sri Kamlesh Pandey, HMS. I welcome you, sir. Thank you. I cordially welcome our CMI representative, the President, Sri Alok Sinha, and Secretary, Sri Sarvesh Singh, to be present and for giving us continual support for enhancing safety in our mines. Thank you and welcome you, sir. In this occasion, the HEMM and the explosive suppliers, along with HOE contractors, could put forth their understanding about mining practices which can be fine-tuned with demand of coal industries and legislation standards to improve safety in mines. I cordially welcome them in this seminar. The ground reality inputs from on the occasion of the success of the seminar is rest on all the head of the departments and area GMs and unit head present here. So on this untiringly effort of our area general managers, the headquarter general managers, the HODs and their team to enforce, enhance and nurture safety in our coal mines. And you are the basic force behind the enforcement. I, from my bottom of my heart, welcome you all in this seminar. Thank you for being present here. And the most important in this seminar is the authors of the different papers those are going to be presented here, and the delegates who are present here from different mines, different areas, to witness, to participate in this seminar. I welcome you all in this seminars. The
the whole effort made by the team from our General Manager Safety and Rescue, Sri P.D. Rathi and his team, a complete set of teams. As you can see the wonderful venue set up for this seminar. I personally welcome and thankful to them to make this venue very lucrative for this seminar to go forward throughout the day. I once again welcome you all in this bonanza of knowledge sharing and the celebration of Azadi Ki Amrit Mahotsav, guided by our DGMS of officials and the mining authorities here. I welcome you in this good morning at Northern Coalfield. Thank you being a part of this. Thank you all. थैंक यू सर। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल है हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से झलकता इतिहास। इस गौरवमयी इतिहास से परिपूर्ण अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में नया भारत आज एक है, अखंड है और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस से 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को दांडी से भारत का रोड मैप तैयार करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव की घोषणा की गई थी। कल हम सभी उस महान दिवस का एक वर्ष पूर्ण किया है। एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 वर्षों को मनाने के लिए आइए चलें आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक फिल्म के माध्यम से। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई। एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा। अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत। आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं, राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने
कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। आत्मनिर्भर भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 7 मार्च से 13 मार्च तक आइकॉनिक वीक का आयोजन किया गया था, जिसमें आज नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड खान सुरक्षा महानिदेशालय के तत्वावधान में बेस्ट सेफ प्रैक्टिसेस इन ओपन कास्ट माइंस विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया है। From the vast pool of knowledge of best practices developed or adopted in various open cast mines in last 58 years, and from the insights on various dimensions of transition in regulatory framework in the backdrop of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 by dignitaries from DGMS, a compendium of 23 technical papers is presented as souvenir of this conference. Now, for the next proceeding of this seminar, I request the dignitaries on the dais to please release the souvenir for the seminar on best safe practices in open cast mines. I request the dignitaries on the dais to please release the souvenir of this conference. I request all of you to put your hands together. For the next part of the proceedings of inaugural session, I hand over this podium to Ma'am Suchindra Sinha Ma'am. Thank you so much, sirs, our respected guests on the dais, for the release of the souvenir for this conference. Now, going to the next part of the seminar, very important part of this seminar, I would, before I welcome our most revered chief guest for the day, Shri S.D. Chidarwar sir, who's the Deputy Director General, North Zone, Ghaziabad Zone of Mine Safety. So before I invite him on the podium for his address, sir, I wish to give a very brief introduction of sir. Shri S.D. Chidarwar sir has assumed the charge as Deputy Director General of Mine Safety, Northern Zone DGMS in the month of December 2020. He has served as DDMS to DMS from February 2002 to December 2020 at the DGMS. He has served as Assistant Manager to Superintendent of Mines from August 1988 to February 2002 at Western Coalfields Limited, WCL. He has obtained engineering graduation. He did his BTech degree from RAC Nagpur and his MTech in Opencast Mining from ISM Dhanbad in 1994 and Diploma in Business Management from Nagpur University in 1990.
He obtained his first-class manager certificate of competency coal in 1992 and first-class manager's competency of metalliferous mines in the year 2012. Sir, I welcome you from the bottom of my heart to please render the presidential address of the chief guest at the podium, sir. Rathi sir would escort sir to the podium, please, for the address of the chief guest for this seminar. Good morning, everybody. आज के सेमिनार ऑन बेस्ट सेफ प्रैक्टिसेस इन ओपन कास्ट माइन के इनॉग्रल सेशन में उपस्थित आदरणीय श्री भोला सिंह साहब, सीएमडी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के फंक्शनल डायरेक्टर्स आदरणीय श्री अनिल सिन्हा साहब, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन, श्री दुबे साहब, डायरेक्टर फाइनेंस, श्री एस सिन्हा साहब, डायरेक्टर टेक्निकल, यहाँ पर उपस्थित मेरे निदेशालय के सभी निदेशक, उपनिदेशक, जेसीसी मेंबर्स, सेफ्टी बोर्ड मेंबर्स, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सभी जनरल मैनेजर्स तथा अन्य अधिकारी, शासन पावर लिमिटेड, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट तथा एपीएमडीसी के प्रतिनिधि, सभी अधिकारी जिन्होंने इस सेमिनार में पेपर प्रस्तुत किया है, क्या करेंगे, उपस्थित महिलाएं, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि तथा इस सेमिनार के आयोजक, सभी को नमस्कार। आज आपने थोड़ा अभी एक वीडियो देखा जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में गवर्नमेंट का आधिकारिक वीडियो था। आपने देखा कि आज़ादी के बाद 75 साल में हम लोगों ने सभी दिशाओं में प्रगति की है और माइनिंग भी इससे अछूता नहीं है। माइनिंग में हम लोगों ने बहुत प्रगति की है। जब हम लोगों का भारत स्वतंत्र हुआ था तब हम लोग की माइनिंग की एक्टिविटी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में थी और हम लोग उत्पादन भी हम लोग का बहुत कम था। बहुत सारा मिनरल्स हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट 95% अपने ही इन हाउस पूर्ण करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने मैनुअल माइनिंग से हाईली मैकेनाइज्ड माइंस तक का सफ़र तय किया है। आज यह साल 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा 7 मार्च से 13 मार्च तक आइकॉनिक वीक मनाने का निर्णय लिया गया। जब यह निर्णय हुआ उस समय में हमें यह आदेश मिला कि आप अपने अपने जोन में एक टेक्निकल सेमिनार या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें और मुझे खुशी है कि आज का यह आइकॉनिक वीक का आखिरी दिन है जिसमें आपका आइकॉनिक सेमिनार होने जा रहा है। आप सब लोगों को इसके लिए बधाई। हम लोग सभी जानते हैं कि ओपन कास्ट माइनिंग दिखने में आसान होता है लेकिन टेक्निकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और जो हमारे माइनिंग इंजीनियर्स ओपन कास्ट माइनिंग में लगे हुए हैं वो
इसे हर दिन हर समय फेस करते हैं, महसूस करते हैं। अगर हमारा प्लानिंग ठीक से ना हो तो हमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप लोग सभी जानते हैं कि हमें डे टू डे बेंच मैनेजमेंट और डंप मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर ये हम लोगों ने टेक्निकली और प्रॉपरली नहीं किया तो इसमें डिज़ास्टर होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है और इसमें डिज़ास्टर ही होते हैं। छोटी मोटी दुर्घटनाएं टेक्निकल फेलियर से नॉर्मली नहीं होती है। हम लोग को डे टू डे वर्क में मालूम है कि हॉल रोड को मैनेजमेंट करना, ब्लास्टिंग ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाना, इसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हम लोगों को उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अगर हम लोग नहीं करते हैं तो कोई ना कोई एक्सीडेंट का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, डस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, HEMM मेंटेनेंस, सभी चीज़ में हम लोगों को हर दिन हर समय कोई ना कोई नया चैलेंज मिलता है, क्योंकि हम लोग निसर्ग से फाइट करते हैं। उनके साथ हमारा डेली का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आता है जो हम लोग बहुत बार प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते हैं। यह माइनिंग अनेक वर्षों से चल रही है। हर माइन में अलग समस्याएं होती हैं और हमारे माइनिंग इंजीनियर्स और उनके साथी अदर डिसिप्लिन की इंजीनियर्स भी बड़े बखूबी से उसका हल ढूंढते हैं और माइनिंग का प्रोग्रेस होते रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है कि माइनिंग इंजीनियर्स और माइंस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे सुपरवाइज़र्स हो, किसी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करने में बहुत कमज़ोर है। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हमारे पास में ऐसा होता है कि एक कोई माइन में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया, वो माइन के लिए सीमित हो जाता है। दूसरे माइन में सेम प्रॉब्लम कभी डेवलप होता है तो जो रेडीमेड सोल्यूशन बगल के माइन में उसका उन्हें पता नहीं होता है और वो भी फिर से वही चक्र चलाते हैं और अपना सोल्यूशन अलग से ढूंढते हैं और ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज़ के समान हमारी भी इंडस्ट्रीज़ में अगर डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस उपलब्ध हो तो बहुत सुविधा हो सकती है। हमारे सभी खदानों में कोई ना कोई बेस्ट प्रैक्टिस, कोई ना कोई इनोवेशंस जारी रहता है और अगर नहीं होता तो खदानें बंद हो जाती, माइनिंग सुचारू रूप से नहीं चल पाती थी। लेकिन ये सब होता है, लेकिन दूसरे किसी को पता नहीं होता है, उनके खदान के लिए सीमित हो जाता है। मैं समझता हूँ आज का यह प्लेटफॉर्म इस चीज़ को शेयर करने का सबसे अच्छा अवसर है, जो कि सभी को दूसरे माइंस में उपलब्ध सेफ प्रैक्टिसेस तथा इनोवेशंस के बारे में जानकारी होगी और वो लोग अपने माइंस में भी इसको अगर लागू करते हैं तो उनका सुरक्षा का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर्स भी है और सभी स्टेक होल्डर्स है जो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्ट से आए हुए हैं। मेरे ख्याल से यह सेमिनार एक अपने आप में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेमिनार हो सकता है, होगा, इसकी मुझे पूरी आशा है और मैं सोचता हूँ कि इसका आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यह सेमिनार सेफ वर्किंग तथा हमारे माइंस के सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक मील का पत्थर जरूर साबित होगा। जब हमें यह सूचना मिली थी कि यह सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है
तो सबसे पहले मुझे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स का ही ख्याल आया और मैंने यह बात हमारे निदेशक श्री एस प्रसाद साहब से शेयर की। तब उन्होंने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स से भी बात की और मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स को कि उन्होंने यह सेमिनार को आयोजित करने के लिए केवल इंटरेस्ट ही नहीं लिया बल्कि पूरा अपना समर्थन देते हुए पूरी मेहनत और लगन से इसको आज इसको आयोजित किया है। इस सेमिनार के लिए हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस सेमिनार में 23 पेपर्स आए हुए हैं और इस पेपर्स को स्थान देने के लिए भी आयोजक लोगों को बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन सभी को मेरे ख्याल से इस सेमिनार में अकोमोडेट करने का प्रयास किया है जिससे कि इस सेमिनार का फ़ायदा सभी को हो सके। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि यह सेमिनार केवल फिजिकली ही नहीं हो रहा है बल्कि यह डिजिटलाइजेशन के द्वारा इसे दूर में बैठे लोग भी देख पाएंगे जिन्हें इस सेमिनार से फ़ायदा होगा। हम लोग बहुत सारे सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन यह ग्राउंड लेवल का जो सेमिनार है ये बहुत कम होता है जिसमें आप लोगों का अपना इनोवेशन, आप लोगों की अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताने का मौका मिला है और बाकी लोगों को उसे जानने का मौका मिला है। मैं इस सेमिनार को सहर्ष और पूर्ण मन से आयोजित करने के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स की पूरी टीम तथा उनके सीएमडी श्री भोला सिंह साहब का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उनके जनरल मैनेजर सेफ्टी जिन्होंने पूरे इंटरेस्ट लेकर और मेहनत से इस सेमिनार को एक आकार दिया है, श्री पी राठी, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे निदेशक श्री एस प्रसाद साहब जिन्होंने बहुत मेहनत राठी साहब के साथ मिलकर की है, उन्हें भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सेमिनार में उपस्थित जेसीसी के मेंबर्स तथा सेफ्टी बोर्ड के मेंबर्स, जो मुझे नहीं लगा था कि वो लोग भी इतना इंटरेस्ट लेंगे और इस सेमिनार को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस सेमिनार में प्रस्तुत करने वाले सभी पेपर्स के ऑथर्स को तथा सभी लोग जो इसमें सहभागी हुए हैं उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सेमिनार से सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और सभी लोग अपनी अपनी खदानों का सुरक्षा स्तर उत्पादन के साथ बढ़ाएंगे। इस आशा के साथ मैं अपने 2 शब्द को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सुरक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड आई एम श्योर वी टेक क्यू फ्रॉम सर्स एड्रेस। जैसे सर ने बताया, वी लुक फॉरवर्ड इन दिस सेमिनार एंड वी वुड एंश्योर sharing mining solutions and information on best safe practices in mines in the backdrop of safety, safe working, health, mining health and safety. And 23 papers is indeed heartening in the physical as well as in the virtual mode that would be presented. And I would thank sir for his very inspiring and kind words that would help energize and spearhead this seminar in the coming sessions. As we all know that Opencast Mining in NCL is highly mechanized, and more than 50% of the mining machinery of CIL, I think, is in NCL, and the 23 drag lines that we have is the jewel in our crown. So with this backdrop, I would now, before we go on,
for the next part of the seminar, I would now request the concerned to please screen a film on safety. Safety film on NCL would be screened. So please take on. Northern Goldfields Limited, NCL Singrauli, is a major contributor towards fulfilling energy requirement of the nation. NCL is a wholly owned subsidiary of Coal India Limited under the Ministry of Coal, Government of India, and is a mini Ratna company. It is India's largest composite producing company and is one among 3 subsidiaries of CIL, which are producing 100 million ton plus coal annually. NCL and ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 certified company. All the mines of Northern Goldfields Limited are systematically designed to work on the approved project report, adhering the EC conditions and the scientific study report prepared under the Coal Mines Regulation 2017. For ensuring safe and environment-friendly coal dispatch, NCL has mechanized coal loading and transport infrastructure. Beside using belt pipe conveyor for coal dispatch, it is also the highest coal dispatching company through dedicated MGR facility to pit head thermal power plants. For better environment management, the different pollution parameters are regularly being monitored scientifically with the help of its lab facilities and CAA QMS. Enhancing green cover in and around NCL mines area, use of mobile and fixed type water sprinklers, fog cannons, etc. are some of the measures being taken by NCL to improve air quality in operational areas. For enhancing safety, Safety Management Plan has been prepared and implemented in all the 10 numbers of large open cast mines of NCL. At NCL, we believe in our workers' participation in safety management and have prepared 116 numbers of Suraksha Mitra Mandali with members of Pit Safety Committee acting as captains of each Suraksha Mitra Mandali, thereby ensuring safety awareness to last employee of the system. Toolkit safety talks, training through simulators, personal counseling, etc. have been adhered to enhancing overall safety culture of the organization. NCL has adopted standard practice for monsoon preparation for keeping the safety and production at the mines during the entire monsoon season. Due to high stripping ratio, the dump management is a challenging job at the mines of NCL. The dumps of shovel dumpers are formed in benches of not more than 30 meters each and are technically and biologically reclaimed to maintain their stability. The monitoring of the dumps are carried out based on the recommendations of the scientific study report, and slope monitoring cells have been formed in each project or mines for the purpose. The health of our employees is our prime concern. Every employee, either departmental or contractual, are provided medical treatment facilities at our dispensaries, situated at every project and mine, and through 3 numbers of well-equipped hospitals situated at command area of NCL, where every employee is facilitated with initial and periodical medical examination. In order to further strengthen safety at workplaces, NCL is developing AR/VR technology for different SOPs and training modules. New initiatives in form of using technology for mine survey and surveillance, intelligent traffic control system in mines, etc. are also being adopted in NCL. NCL is committed to serve the nation for its energy security and prosperity, and will always be there to enlighten the lives of proud citizens of the country. So that indeed was a very inspiring film on safety.
and that we just saw. And actually, we did not come out of Stone Age because we ran out of stones, but we actually made a transition. We transited to better solutions, as in energy efficient solutions, environment friendly solutions that would be quality complete, and safe solutions, keeping an alert eye on safety. तो गुणवत्ता संरक्षण, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो या ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता का बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है खान सुरक्षा. So now, coming to the most important part of this inaugural session, before I would invite our most revered CMD NCL, who is the president of this seminar and chairing this seminar for the day, I would just give you a brief introduction before I would invite you, sir. We stand humbled and proudly bask in your leadership, sir, with hope in our hearts and dedication in our intents to take on as the captain of our NCL ship and steer NCL into a post-COVID, digitized, automated world of Industry 4.0 to the next level of mechanization and a very alert eye on health, environment, energy efficiency and safety. Talking of Shri Bhola Singh sir, CMD NCL, he assumed charge as Chairman cum Managing Director, Northern Coalfields Limited from the 1st of January 2022. Professional mining engineer with over 34 years of experience in reputed public sector and private sector organizations. Sir started his career with Northern Coalfields Limited in 1987. His experience took him to AES, a US-based multinational company, as well as Odisha Power Generation Corporation, OPGC. He has worked as project director at Sasan Power Limited and also worked as Director Technical of Central Coalfields Limited from 15th of January 2019 to 31st of December 2021. He is a graduate mining engineer from our country's premier institute, Indian Institute of Technology, Kharagpur. He has introduced coal blasting and eco-friendly electronic detonation in NCL mines. He has the honor, he has a feather in his cap of conducting one of the largest blasts in our mines. He has also published many technical papers in blasting and rock fragmentation in journals of national and international repute. Sir, I most warmly and heartily and humbly request our CMD NCL President, who is chairing this seminar, P.D. Rathi sir, please guide sir to the podium for his presidential address. सुप्रभातम, सबों को नमस्कार। देवियों सज्जनों, esteemed chief guest Sri SD Chidravar Sahab, DDG, North Zone, my fellow functional directors on the dais, all the special guests from DGMS North Zone, fellow industries Sasan Power Limited, Amelia Coal Mine, Ultratech, APMDC, all GCC members, NCL Safety Board members, all area general managers and HODs of NCL, all industry partners, HEM manufacturer, sludgy manufacturers, HOE contractors, coal transporters, and all business partners.
all the authors and delegates, all the participants who are joining the seminar through Wavelink, social platform in Singrauli coalfield and other mines and other CIL subsidiaries, person from media. I feel really very delighted to be part of this seminar. It's very coincidental also. We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and it's a celebration which sprinkles nectar to all of us. India is evolving, and if you look at what NCL does, is the prime mover of electricity generators help. Been to this subsidiary since in second spell of my career here, from 1st of January 2022, and the energy I have seen in all of you is unparalleled, and that is why we are on track to meet country's coal requirement. So that is something very much satisfying. As you know, NCL is such a subsidiary where we have a lot of mechanization. I have seen the time when I joined here as a jet, 1987. A lot of happenings since then. I witnessed erections of many drag lines and shovels, many dumpers, mines at a nascent stage. Now some of the mines are getting old. So it's a long distance travel is starting from scratch to what we are today. Today, this financial year will be producing about 122 million ton and around 390 million cubic meter OB. A dispatch target is also equally very high, 126.5 million ton. And it is my pleasure to make this announcement. We are number 2 in terms of 100%, more than 100% coal production as prescribed by Ministry of Coal to us. So the moment we endeavor to produce more, so it entails for a lot of activities. Activities done in perfection, which usually happens in NCL, but there are human elements too, which cannot be ignored. This keeps us always haunting that safety first, then everything. I will add another thing, that is safety, environment, then production. So this is the call of the day, and this seminar is very relevant to spread all fragrance to everybody whosoever is working for coal mining. It's my privilege to welcome you all to this seminar on best safe practices in opencast mines, organized as a part of observance of iconic week from 7th March to 13th March 22 by Ministry of Labor and Employment on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, celebrating 75 years of India's independence. Coal production in Singrauli coalfield has increased to about 140 million ton through NCL and other companies in the vicinity like SPL, JPVL,
in last 6 decades since systematic coal mining is started in 1964. We have a very long legacy of doing mining here. And some of the mines have been closed also partially. During 22-21, Singrauli coalfields contributed to 136.4 million ton. That is about 20% total coal production, with 24% of total OB removal in India. That is 464 million cubic meter out of 1926 million cubic meter. So it's a matter of great concern and privilege too, to have this great happenings here. Around 25% of total excavation in coal mining in India is happening in this small area of Singrauli coalfield. The excavation volume will further increase in next 3-4 years. As you know, we have very ambitious One Beti plan of Ministry of Coal, Government of India, to effectively control import of coal. Our Honorable Prime Minister is very much worried. He'll be surprised to know, after chips, electronic chips, this is the second item we import the most. The country having abundant coal reserves up to 300 meter depths. I presume that next 100 years, country will continue to produce coal as per the requirement of the nation. The geo-mining conditions prevalent in Singrauli coalfields, coupled with systematic planning, has resulted in unique world-class mega mechanized mining complexes. This is truly exhibited by 23 draglines. It's a unique subsidiary. And in the vicinity also, we have one of the largest dragline in Asia. So this is something tell us that the entire Singrauli coalfield is full of vibrancy. Happenings are happening every time, every moment here. Challenges emerging out of increased contribution from HOE, use of small equipment and tippers, increased traffic density, advancement of the mines towards habitation area, increased depth and stripping ratio, to be addressed through proper adoption of suitable alternatives and means. It will be very relevant to mention here that as we go deeper to the mine, some of the mines will be quite deep, and diesel operated equipment is leaving great footprint, carbon footprint to us. It's a call of the day also. So how to increase the efficiency of diesel operated machines, and think out of box, just putting in-pit crushing and conveying system coupled with high angle conveyor will be the future technological pursuit to do mining eco-friendly and safely. For Atmanirbhar Bharat, our contribution needs to be continuous, efficient, matching to the national aspiration of growth towards journey of becoming a developed nation. Safety is a precondition for granted continuity in production. The main objective of existence of our industry is embedded in our mission, a statement reflecting the highest status it shares with production. Hence, it is imperative that
we adopt the best safe practices and achieve the goal of the zero harm. Contextual to mention, we have lot many things as prescribed by Ministry of Labour, Government of India through DGMS, and we have rich experience of operating open cast mines. But still, unfortunate accidents are happening. I see two great reasons behind this. Number one, we know, but we are not serious. Secondly, the influx of HOE workers, the type of training orientation they go through, is probably one of the greatest area where we have to think collectively how to improve safety standard. Seeing this industry over more than 3 decades, a lot of changes have taken place in terms of safety facilitations. If we compare our working with world-class operation, we leave certain overcomplacency. We know, but sometimes we do not practice. Why this is a feeling? Why this is apathetic approach to operation? That somebody will tell me that you should do this, and that is why self-regulation came in. I express my hearty thanks to Ministry of Labour and DGMS that self-regulation is the call of the day. Nobody will tell us, you do this is wrong, this is right. One has to be always on, as you are serious about production, then equally to the safety. So that is why there is a concept we call job safety analysis. Job safety analysis compliance by ourselves is probably at a better stage, but sometimes we give priority to something else. Production is the rather more priority. But this mindset needs to be changed. Then how to go forward? Well-defined SOPs are there, but I doubt many of us really go in letter and spirit to practice it. And it's a dynamic document. DGMS will never tell you that it is static. How many times we approach to DGMS authorities that I have come up with this idea to make it dynamic. I think erstwhile UP Singh Sahab, who is DDG Western Zone, I was there in Sasan at that point of time. So we used to discuss at length. RK Singh Sahab, I remember you, he joined later. So we used to talk at length about this. This is for benefit of everybody. Human is the greatest resource on earth. It has capability to deliver minus infinity to plus infinity, provided we provide a conducive environment. And environment starts from safety itself. So that is one aspect. The second aspect, which I feel, as I have mentioned about HU workers, their requirement of safety needs to be intensified exponentially. That is probably missing. Very few of the HUE operators are eager and suo moto propelled to have training facilities in their installations. One of the items, what I feel, changing operators. I mean, contractor remains more or less same in this coal field, but operators keep on changing. So the legacy and rich experience of
doing mining is probably getting lost. So how to make it institutional? I will urge this House, and as a collective effort, I mean, nobody can do it alone. Whosoever notices that something is happening which needs to be improved, must be improved immediately. I mean, there is zero tolerance and laxity for this. So this I just wanted to impress upon all of you. I came to know there would be 23 speakers of eminence in the field of operation and safety management. And I've seen some of the papers also. It's very relevant. And today is an opportunity for all of us to come out of self-complacency. So we are the best. No, they are better than you people. Provided you have a urge to look into others' window. I have seen some of the private mines here in the vicinity, especially if you quantify in terms of production, is a small mine, Amelia. But see their environmental management. Why I am mentioning this? Environmental management linked to safety with operation is probably the call of the day. I have seen their benches, how beautifully they have planned. Dumping, even 300 mm rains occurs in 24 hours. Nothing will happen, I'll tell you. Geotexting in all OB slopes, beautifully designed drains, something to be shared to each others. I would like to mention about Sasan Power Limited, where I spent about 5 years as a project director. Tough mine, condition very similar to NCL, but cultural differences is a lot. Everybody was safety custodian over there. Unfortunately, many accidents took place over there. So, the manpower was attributed to brought to that safety standard levels. They resorted for simulator. I'll tell you, they had the best operator of 28 years age of dragline. So training, experience sharing, and not being complacent for safety will make us on the top of the business. As you know, our next coal reserve lies in main basin. It's a deep-seated deposit. As far as our business in NCL is concerned, today or tomorrow we have to switch over to underground to meet country's requirement coal. Probably in NCL, since we have majority of the opencast mines, so though we all possess first class certificates, second class certificates, but our experience to underground is probably missing. So let us be, if not, we are not practicing, but be sensitive to underground mines. And especially if you look at NCL's business, we are doing something about 142 million ton in next 10 years. Challenges will be increasing. Many of our
HEMM is getting outlived will be replaced by suitable HEMM. It will happen within next 2-3 years. So our onus to safety will not going to be lesser, rather it will be intensified. I am very much pleased to see that this one-day seminar through valued paper presentation will help all of us to regenerate the driving force of safety to all of us. As a mine operator, we are always in tandem with DGMS, your esteemed valued suggestions and directions. You had been always guiding us to improve continually on safety matters, and I'll promise you on the behalf of NCL, whatever I am supposed to do as far as facilitating safety pursuits by gadgets, by practices, will put forth on the top. I wish this seminar a great success and great takeaway at the end of the day. All the best. Thank you. Thank you so much, sir, for your words of inspiration. So we look forward to our iconic leader to mark the end of this iconic week. Thanks so much for energizing not only people present here, not only this seminar, but Team NCL as such. So you told us that we are number 2 in 100% coal production as given by the Ministry of Coal. These are little inspirations for the dedication of our workforce. So you also said that around 20% of the coal production of the nation comes from the Singrauli coal fields. Sir not only deliberated on northern coal fields, but also the mining operations in the vicinity, where we can learn from the best practices, especially regarding safety, and 24% of overburden production, OB production. Sir mentioned some of that. NCL is one of the most mechanized coal fields. The mining challenges that lay ahead and the solutions to mitigate carbon footprints. Safety lends continuity to our production and productivity, and self-regulation is the call of the day, to mention some of the very few salient features. And I'm sure what Sir mentioned would be seen in the papers, the challenges with the solutions in the 23 papers to be presented. So thank you so much, Sir. And before we go on to the last part of this inaugural session, as we celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 glorious years of our freedom struggle, and at 75, its ideas, resolve, action and achievement at 75. In this backdrop, the elixir to this pristine stage of this seminar is the stage management team of the gracious ladies. I would just want to mention and bring before you the team: Mrs. Indubala, Ms. Yashika Kapoor, Ms. Sareen Rahi, Ms. Pooja, Ms. Komal, Ms. Monadeepa, Ms. Shabnam, and Ms. Rekha Agnihotri. Can you put your hands together, because they're a very important part of this seminar, and throughout the day they would continue with their services. Thank you so much. So now for the presentation of the mementos, I would request CMT NCL Shri Bhola Singh Sir to please present a memento, small token of our gratitude to our chief guest, Shri S.D. Chidarwar Sir, Deputy Director General of Mine Safety. Just to express our gratitude, a small token, sir. On behalf of NCL, thank you so much, sir. We express our gratitude from the bottom of our hearts. I would now request our Director Technical Operations, Dr. Roninder Sinha, to please present a moment
a memento, our moment of gratitude to our most respected CMD NCL and President who's sharing this one-day seminar, Shri Bhola Singh sir. Thank you so much, sir, for your inspiration, your concepts, and taking on this seminar. Thank you, sir. Now I would request Shri V.K. Agarwal sir, GM Kakri, to please come on stage and express our gratitude to Director Technical Operations, Dr. Aninder Sinha, to have supported this seminar on safety. To him, and this is actually gratitude to him and his entire team. Thank you so much, sir. Next, I would request Shri S.P. Singh sir, GM Krishna Sheela, to please come on stage and felicitate our respected Director Finance, Additional Charge, Director Personal, Shri Ram Narayan Dubey sir, without whose support, I guess, it would be very incomplete. Finance, the most important ingredient to any success story. Thank you so much, sir. I would now request GM Nigahi, Shri Harish Duhan sir, to please come and felicitate our Director Technical, Projects and Planning, Shri S.S. Sinha sir, again without whose support and help and guidance, this seminar would not have seen the light of the day. Our moment of gratitude to you, sir. Thank you so much, sir. So now as we come to the end of the inaugural session, I sign off here by, before the vote of thanks, because I would just want to announce that we get back to this seminar after the break, because before I announce for the vote of thanks, we get back at what time? What time, Rathi sir, do we get back? At 11:30? 11:30 would be too soon. 11:45? At 11:45, I would request the House, and please, the House must be present for the presenters to present their paper. They should not be presenting to an incomplete House. With a request to everybody to please get back at 11:45. So before I come to the last part, the vote of thanks, before I invite our most respected Director Finance, Additional Charge, Director Personal, Shri Dubey sir, I would want to give a brief introduction about Dubey sir. Shri Ram Narayan Dubey, our Director Finance, he has assumed the charge of Director Finance of Northern Coalfields Limited on June 2020 and assumed additional charge of Director Personnel in August 2021. He is a chartered accountant who holds an MBA degree from Calcutta University. He has been working with Coal India Limited since October 8, 1987. He had a vast experience. He began his career at Southeastern Coalfields Limited, SECL, and was later transferred to BCCL, Bharat Coking Coal Limited, in December 1988. He was promoted as Chief Manager Finance in April 2013, and that's when he joined Coal India. So he also has experience of Coal India Limited. With this vast experience and with his contribution to this industry, sir, I would now request Shri Ram Narayan Dubey sir to please take the podium, sir, for the vote of thanks. The most important conclusive part, and I sign off here for the inaugural session. Thank you so much. Thank you, Suchandra. इस सभागार में मंचासीन हमारे आज के चीफ गेस्ट डिप्टी डीजीएमएस चिदरवार साहब, जो कि नॉर्थ जोन से हैं, उनका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इतनी दूर की यात्रा करके वो यहाँ सिंगरौली के पावन धरती में दोबारा आए हैं। चिदरवार साहब से पहला परिचय हमारा कुछ दिन पूर्व हुआ था। सेफ्टी वीक हम लोग मना रहे थे, डीजीएमएस सर भी आए थे, चिदरवार सर भी आए थे, सब लोग। तो उस दरमियान हमको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनके साथ रूबरू होने का मौका मिला था। जब हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ तभी हम समझ गए
कितना पॉजिटिव सोच है इनका, और ये कितना चाहते हैं कि किस ढंग से हमको बताए कोई कोई पॉइंट कि हाँ हाँ ये सब सुधार की गुंजाइश है। हमने उसको संज्ञान में हम लोगों ने लिया, और हमें इस बात की खुशी है, प्रसन्नता है कि जब सर आपसे पूछा गया कि दोबारा आप ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहाँ करना चाहेंगे, तो आपने एनसीएल को चुना। इसके लिए हम सर आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एनसीएल के ही पावन धरती को चुना दोबारा इस कार्यक्रम के लिए। इसके बाद हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मार्गदर्शक, हमारे सीएमडी सर आदरणीय भोला सिंह साहब का, कि जिनके मार्गदर्शन में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। भोला सिंह साहब के बारे में एक वाकया बताना चाहेंगे हम। पहली बार सर से मुलाकात हमारी हुई थी, हमको याद है, 11 दिसंबर 2021 में एक सेमिनार चल रहा था कलकत्ता में। सेक्रेटरी साहब थे, पूरा मिनिस्ट्री था, कोल क्राइसिस का समय था। सर सीसीएल की टीम से आए थे, हम लोग एनसीएल की टीम से गए थे, अलग अलग बैठे हुए थे। उस समय सेक्रेटरी साहब का ये था कि जल्दी से जल्द हमें कोयला का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, देश को ज़रूरत है, और क्राइसिस मैनेजमेंट का बात उठ रहा था। हमारे सीएमडी साहब दी देन हमारे एक्स सीएमडी पीके सिन्हा सर थे, उनको ये दिया गया कि आप 119 टन का लक्ष्य है उसको आपको 122 टन करना होगा, और हमारे पीके सिन्हा सर ने उसको सहर्ष कबूल किया। सिन्हा साहब जब आए, पूछा था, हम लोगों से पूछा था कि डॉक्टर अरिंदर सिन्हा ने हामी भरी, उन्होंने कबूल कर लिया। जब आए सर तो हमने कहा कि सर 119 का 122, बोले घबराने का कोई बात नहीं है, 2 टन तो ऐसे ही हम लोग 2 मिलियन टन हर बार ज़्यादा करते हैं, तो करेंगे 122, और नहीं होगा तो क्या होगा, फांसी होगा। मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका। लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद इनकमिंग जो सीएमडी आने वाले थे भोला सिंह साहब से हमने कहा कि सर 122 मिलियन टन का लक्ष्य आपसे भी पूछा गया, सेक्रेटरी साहब ने पूछा जब सिन्हा साहब को बोले, तो आपने भी हामी भरा है, तो कर लेंगे ना आप। तो बड़ा सहजता से जो तरीका है जो देख रहे हैं आप लोग, बड़े सौम्यता से उन्होंने बोला नहीं नहीं आप लोगों का सहयोग है, क्यों नहीं होगा। उनके वाणी में जो कॉन्फिडेंस था उसको देख के हम दंग रह गए कि नहीं, जब सिन्हा साहब ने कबूल कर लिया है तो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। वो जो कॉन्फिडेंस की भावना थी, जो बॉडी लैंग्वेज था, तो हमें रियली हमको लगा कि नहीं चलिए एक अच्छा शख्स एनसीएल में पदार्पण हो रहा है। जिस यहाँ आए हमने देखा मापदंड बेंचमार्क सिन्हा साहब ने अच्छा बना दिया था, विगत 4 साल में बहुत तरक्की किया, ऊंचा बेंचमार्क था। लेकिन जिस ढंग से अभी बीता है 2-2.5 साल, और टीम एनसीएल वही बेस्ट प्रैक्टिसेस के कारण हम लोग 122 मिलियन टन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उसी के कारण मार्गदर्शन जरूर है सर का। सर का जो पर्सनालिटी आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना शांत स्वभाव के हैं, सौम्य, मृदुभाषी। बता दें कि डिसीजन में उतना ही फर्म है। सेफ्टी के मामले में 0 टॉलरेंस, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। प्रोडक्शन अपनी जगह है, सेफ्टी के मामले में बार बार आगाज कराते रहते हैं हम लोगों को कि नहीं, कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना है हम लोगों को। और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे यहाँ सीएमडी बन के भोला सिंह साहब जैसे लोग आए हैं जिनको कि पब्लिक सेक्टर का भी है अनुभव, प्राइवेट सेक्टर का भी है। ये 4 चांद लगा दिया है इनके पर्सनालिटी को, कार्यशैली में। हम लोग जिंदगी भर कुल इंडस्ट्रीज में ही रह गए, देखे ही नहीं बाहर की दुनिया। इसी में अपना हम संलग्न रहे, मन लगाए रहे, और जगह क्या हो रहा है उतना हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो पाया। इन्होंने चैलेंज लिया, बाहर गए, और वही इनकी थी विशेषता कि पुनः फिर आए हैं एनसीएल में। 20 साल एनसीएल में थे, एनसीएल से पूर्व परिचित हैं,
हमें पूर्ण विश्वास है कि एनसीएल आपके लीडरशिप में सर और टीम एनसीएल के सहयोग से हम लोग जो भी लक्ष्य दे मंत्रालय, निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे सर। आज मंचासीन हमारे डीटीओ सर डॉक्टर अनंदय सिन्हा, हम कभी ऑफिस से निकलते हैं 8:30 बजे 9 बजे, हम देखते हैं कि हम निकल रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, टीम को भी बैठाए हुए हैं, लगे रहते हैं। जो निष्ठा जो है इनके कार्य के प्रति, और मॉर्निंग में देखते हैं 6 बजे देख रहे हैं, 6:30 बजे फ़ोन लेके घूम रहे हैं, रिपोर्ट, मतलब जो निष्ठा हमने देखा इनके अंदर ना कार्य के प्रति, और जो नेचर है, जॉली नेचर है जो इनका, इसके कारण जो सहयोग मिल रहा है एनसीएल को, ये टीम का ही है, राइट नो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उन्हीं के सहयोग से जो भी हो रहा है उत्कृष्ट प्रदर्शन एनसीएल का हो रहा है। सर हम आपको धन्यवाद देंगे, आपके अगुवाई में ये सब हो रहा है, आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। हम अपने डीटीपीएनपी सर श्री एस.एस. सिन्हा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनका कि स्वभाव आप लोग देखते हैं बहुत शांत हैं, सौम्यता इनके अंदर है। कभी कभी मजाक में हम बोलते हैं इनसे कि सर थोड़ा गुण हमको भी दे दीजिए अपना, लेकिन ये समझते हैं कि सब ईश्वरी देन है, इनको देखकर हम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, अपने को अपग्रेड कर सकते हैं, बट एस.एस. सिन्हा नहीं बन सकते। इनका जो एक पर्सनालिटी है, तो सर का हम हर फंक्शन में योगदान रहा है, इसमें भी विशेष योगदान है। सर हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे डीजीएमएस से डीएमएस सर, डीडीएमएस सभी लोग उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग की अगुवाई में ये आज का सेमिनार चलेगा, और उससे हम लोगों को ब्रेन स्टॉर्मिंग जो सेशन होगा, निश्चित रूप से एनसीएल को इसमें लाभ मिलेगा। हम एनसीएल हमेशा इस धर का पक्षधर है कि आप हमें अपना कमी बताइए, हम कमी को देख के हम अपने में सुधारना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, उसको हम निगेटिव वे में नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है और उसका निवारण कैसे हो। आज के जो होगा ये, इसमें हमको आशा है कि बृहद रूप से चर्चा होगा, एनसीएल को लाभ मिलेगा। टेक्निकल सेशन में जो भी पेपर आया है उस पर विवेचना होगी, और आप लोग सर हमें मार्गदर्शन कीजिए कि कहाँ कहाँ हम लोगों को अभी और भी बढ़ना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ हमारे रिलायंस, जेपी सब लोग आए हैं, संडे के दिन आप लोग आए, सभी का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जेसीसी मेंबरान देख रहे हैं कि अजय जी, हमारे पीके सिंह जी, मालविया जी, हमारे सभी लोग, पांडे जी हैं, विष्ट जी हैं, मायाशंकर जी हैं। एक बात तो निश्चित है, बिना श्रम संगठन के सहयोग से कोई भी कंपनी उत्कृष्ट पे नहीं पहुंच सकता है, बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। आपका हमेशा जो सहयोग रहा है, चाहे कोई भी फोरम हो हमारा, हम देखते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इससे हम लोगों को बल मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके संग हमारा हर चीज़ पे तालमेल होता ही है, विचारों का मतभेद होता है, लेकिन हम लोग जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ के आपसी विचार विमर्श के बाद सुलझाते हैं, और ध्येय सबका एक ही है, आपका भी हम लोगों का, कि एनसीएल की तरक्की हो। जब ध्येय ये एक रहता है तो कहीं अड़चन नहीं आता, और हम लोग उस चीज़ को सुचारू रूप से चला रहे हैं। आप आए, आप लोगों का धन्यवाद है। हम देख रहे हैं हमारे जितने भी एरिया जीएम आए हुए हैं माइनिंग फ्रेटर्निटी के, उनको लाभ मिलेगा इस कार्यक्रम से, और मेन तो जो भी एनसीएल कर रहा है एरिया लेवल में ही हो रहा है। सीएमडी साहब का मार्गदर्शन और इम्प्लीमेंटेशन होता है एरिया लेवल से। तो आप लोग आए हैं, बहुत खुशी हुई, और आप लोग इसको ग्रेट सक्सेस होगा ये हमको विश्वास है। इस सभागार में जितने भी हमारे अफसरगण हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम सभी का तहे दिल से हम सबको धन्यवाद देते हैं। अंत में विशेष तौर पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुचंद्रा मैडम, जिस ढंग से इन्होंने आगाज किया आज,
जिस ढंग से इन्होंने शुरुआत किया देखने योग्य था, दिल द्रवीभूत हो गया। जबकि आज इनको हमको मालूम है कि इनको कितना ज़रूरत है अपने घर में, लेकिन उसको छोड़ के इन्होंने आया यहाँ का जो संपादन किया बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैडम धन्यवाद। अंत में जितने भी ये जो आयोजित किए हैं, ये टीम एनसीएल राठी साहब के लीडरशिप में ऑर्गेनाइजर जो हैं, उनको हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इतने निष्ठा के साथ आप लगे रहे टीम के साथ, उसी के कारण ये हम देख रहे हैं फलीभूत हो रहा है। अंत में हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं और जितने भी लोग हैं सभागार में जिसका नाम हम भूल गए हों, सभी का हम अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सेमिनार के फर्स्ट सेशन के लिए हम फिर से पुनः एकत्रित होंगे 11